A very good morning to all my dear students. My name is Shubhangi. Student, earlier I have provided you the PPT of active and passive voice in past indefinite tense, and in that I have written all the rules of sentences, that is affirmative sentences, negative sentences and interrogative sentences in past tense of active and passive voice with their examples. I hope you have all understood those rules easily because there is not much difference between the past tense rules and the simple past rules. And today we are going to start further active and passive voice in past continuous tense and past perfect tense. So let's start. Firstly, we are going to discuss active and passive voice in past continuous tense. Our first type of rule is affirmative sentence. So the rule for affirmative sentence in active voice is subject plus helping verb plus main verb first form plus ing plus object. यहाँ पे helping verb was were use हुआ because we are doing past tense. We have also discussed earlier when we are doing sentences of present tense is, am, are used as helping verbs. But when we are doing sentences in past tense, was, were used as helping verbs. And main verb first form plus ing because we are doing continuous tense. जैसे हम आप लोग टेंसेस में पढ़ के आए होंगे उनके रूल्स को, तो कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है, सेम वही रूल फॉलो होगा. Now in passive voice, the rule for passive voice is same as the rule for passive voice rule in present tense. ये जो पैसिव वॉइस का रूल है पास्ट टेंस में ये बिल्कुल सेम है प्रेजेंट टेंस वाले रूल के साथ. बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज ओनली ऑफ हेल्पिंग वर्ब, दैट इज वॉज एंड वर. In that rule we are using is, am, are, but in here we are using was and were, and the whole rule remains the same. For example, Mr. Ravi was teaching English. In passive voice, this is the active voice sentence, and when we convert it in passive voice, English was being taught by Mr. Ravi. According to the rule, first of all, I hope you all are cleared with what is the subject, object, and verb. And when we convert it in passive voice, according to rule, object came first, then helping verb, then being plus main verb's third form. जैसे teaching का taught, but then by, and then subject is Mr. Ravi. So it's very easy students. अगर आपको present tense के रूल समझ में आ गए हैं तो past tense के रूल समझना आपके लिए बहुत ही easy हो जाएगा, बहुत ज़्यादा. कोई difference नहीं है, आपको सिर्फ रूल्स याद रखने हैं. अगर आपको टेंसेस के रूल्स पता है तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी. और अगर आपको टेंसेस के रूल्स नहीं भी याद है, अगर आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, अगर आपको वो भी समझ में आ गया ना, तो भी आपको बहुत ही ईजी होगा इनको समझना और एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना. So our next type of sentence is negative sentence. Same, it's very easy. Active voice sentence में हमारा not ऐड हो जाएगा, बाकी हमारा जो भी रूल था वो सेम रहेगा. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब was were प्लस not प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing and object. Then when we convert it in passive voice, the same rules follows, and then just not is added. as you know, negative sentence में बेटा not ऐड होता है, जैसे आप सबको पता है, और कोई डिफरेंस नहीं है. बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी हैं हमारे पास्ट टेंस के रूल्स. एंड फॉर एग्जांपल, यू वर नॉट ड्राइविंग अ कार. हियर you is our subject, were is our helping verb, not is added because it is a negative sentence. Here drive is our verb, and verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग गया तो ड्राइविंग हो गया. A car is our object. When we convert it in passive voice, object came first, that is a car. Was not, यहाँ पे सिंगल कार की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे was लगा. यहाँ पे you की बात हो रही है, वर लगा. you प्लूरल में काउंट होता है तो इसलिए जब एक से ज़्यादा होते हैं, जब प्लूरल होता है तो वर लगता है, जब सिंगुलर होता है तो was लगता है.
हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट ऐड होगा, देन बीइंग हमारा ऐड हुआ ही था पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा मेन रूल है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे कॉन्टिन्यूस में तो हमारा बीइंग यूज होगा। देन ड्राइव का ड्रिवन हो गया क्योंकि ड्राइव हमारा वर्ब था। व्हेन वी कन्वर्ट इट इन पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो ड्राइव का ड्रिवन हो गया। एंड देन बाय इज ऑल्सो एडेड एंड देन यूज आर सब्जेक्ट। Then our next type of sentence is interrogative sentence. In interrogative sentence, the helping verb came first because the sentence is in question form. So in active voice, helping verb came first, was, were, then subject, main verb first form, ing and object, and question mark is very important in interrogative sentences. Then passive voice, it also remains the same, just helping verb came first. For example, were you cooking the food? Question mark. Helping verb came first, were, then you is there because you counts as plural. That is why we have used were here. Cooking the food. हमारा verb था cook, उसके साथ verb की first form के साथ ing लग के cooking हो गया, and the food is our object. When we convert it in passive voice, was the food, because food की बात हो रही है तो वो singular में count होता है. Was the food being cooked by you? Our object is food, being is added according to our rule. Then cooked, cook का third form we used cooked, and then by and you, and then question mark, which is very important in interrogative sentences. Then our next type of sentence are active and passive voice in past perfect tense. So our first type of sentence is affirmative sentence. In active voice, the rule is subject plus had plus main verb third form plus object. So in active voice, you need to understand one thing very clearly कि जो भी sentence active voice में होता है, जो हम tenses में sentence लिखते थे ना, वो same rule हमारा active voice में लगता है. That same rules follow for the active voice, whatever the rule it is in tenses. And our helping verb had is used here. We don't need to use any other helping verb in past perfect tense. Only had is used in past perfect tense. जैसे हमने present में किया था वहाँ पे has have use हुआ था, और यहाँ पे अब हम past में कर रहे हैं तो यहाँ पे had use हो रहा है. आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ was were लगेगा, is am are लगेगा. यहाँ पे already had दे रखा है और यहाँ पे already main verb हमारी third form में है, तो हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे हमने प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन ऐड किया था, वैसे ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बीन ऐड करेंगे. बाकी सारा रूल सेम फॉलो होगा. बीन एंड बाय आर एडेड व्हेन वी कन्वर्ट आवर सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इन पास्ट परफेक्ट टेंस. सो फॉर एग्जाम्पल, he had sung a song. He is our subject, had is our helping verb, sung जो हमारा song sing का था, sing की third form हो जाएगी sung. A song is our object. Then a song, object came first, then helping verb had, then been is added because we converted it into passive voice from active voice. Then sung is our verb, then by is added according to the rule of passive voice, and then him. he का him हो गया. जब हम प्रोनाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो वो चेंज होता है. ही का हिम हो गया यहाँ पे चेंज. Our next type of sentence is negative sentence. Here the same rules follow as we have previously discussed few minutes back. The rule for affirmative sentence, in negative sentence only not is added after our helping verb. हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट ऐड होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारे रूल है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के. ये बहुत ही सिंपल है बेटा, इसको आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी समझने में अगर आपको प्रेजेंट टेंस के रूल्स इजीली समझ में आ गए हैं. देन फॉर एग्जांपल, राकेश हैड नॉट सेंड द मैसेज. आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर
of the subject, verb and object of the sentence. Then when we convert it in passive voice, the message had not been sent by Rakesh. Our object came first, then our helping verb, then not. Then according to the passive voice rule, in past perfect tense, been is added. Then our main verb third form sent, and by is added also in passive voice, and then our uh, subject is Rakesh. I hope you are all I hope you all are getting it, as it is not very difficult to understand. Our next type of sentence is interrogative sentences. So as you all know, when we write a sentence in interrogative sentence, helping verb came first in the sentence. So in active voice rule, helping verb came first, that is had plus subject plus main verb third form plus object and question mark. When we convert it in passive voice, same rules follow, just been and by is added, and which is always added in passive voice. Helping verb had plus object plus been plus main verb third form plus by plus subject and question mark. For example, had Vikram built the house? Here helping verb, then our subject build, build का third form built, main verb third form, and the house is our object, then question mark. Then when we convert it in passive voice, had our helping verb, our object, after a helping verb our object came, then our been, then main verb's third form, that is built by plus Vikram is our subject and question mark. So students, today we have completed our rules for active and passive voice in past tense. So these are some practice questions for you. Try to solve these questions by using the rules which I have taught you, and if you are having any difficulty regarding these, you can ask me in the comment section anytime, and try to do it yourself without any help, just applying the rule of the past tense. And I hope students you are wondering why I haven't taught you about the double interrogative sentences. Uh, the rules for the double interrogative sentences is same as the rule for interrogative sentences. जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में उसके रूल करवाए थे. जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उनमें सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली ऐड होती है और उसमें कोई चेंजेस नहीं है रूल में. तो जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, अगर उसके आगे आपको वाई लग के आता है कभी भी एग्जाम में, या फिर आपको कहीं भी सेंटेंस दिख जाए वाई के साथ और वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में हो, क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा हो और उसमें डब्ल्यू एच फैमिली यूज हो रहा हो, तो वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. और उसका जो रूल है वो बिल्कुल सेम है हमारे इंटेरोगेटिव के रूल की तरह. जो रूल हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो, सेम रूल्स फॉलोड बाय द डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस एज वेल एज पास्ट टेंस. इसलिए मैंने आपको वो दोबारा से उसके रूल्स नहीं बताए हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ होता है. फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आए उसमें, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. So these are the sentences which I have given you for your practice, and the answers of these sentences will be provided you tomorrow in the next video, so that you can tally or match your answers with them. So students, thank you so much and have a nice day.